Yeah. All right. So Chintan, Hmm. let's start. Like, this is the first question I'd like to ask anyone I'm talking to in terms of cricket. What is your earliest memory of cricket? My earliest memory of cricket would be actually watching Sachin Tendulkar on TV. When I was, I guess, 4 or 5. At that time, I used to watch many matches of I guess Coca-Cola Cup in 1998 or so. I may be wrong about the year, but Sachin Tendulkar smashing the bowlers of Australian cricket team or Zimbabwe cricket team was like was the you know uh, entertaining part of the day for me to watch Sachin Tendulkar bat. And I was just 3 or 4 or 5 then. And अगर इंडिया का स्कोर 50 रन्स होता था तो आई यूज टू थिंक दैट सचिन का 50 रन हो गया है. And I used to enjoy so much that I used to run whole of my home, and I used to say that Sachin has scored 50, Sachin has scored 50, and everyone used to come and watch that. Then they used to tell me that Sachin has not scored yet. Sachin is on 30 or 40, and Indian team has scored 50 runs. So that Right. was my earliest memory of cricket. That's so nice. I think because that's like for a very long time the score of the Indian team kind of depended on what Sachin On made. him, So it yes. makes a lot of sense. Yeah. Yes, the whole he was the whole and soul of Indian cricket team that time. So everything depended on him. So every child's dream was to get that MRF bat once in a lifetime, and that was mine Yeah. too. So every time I get out with my father for something, I used to tell him, "Papa, please buy me the MRF bat of Sachin Tendulkar." Uh, I think Sachin had this influence on not just people who followed cricket, in terms of like people who were passionate about cricket, but he y- transcended that so much. I'll tell you what, मैं ना बहुत ज्यादा ये जो इंजरीज है ना hmm. उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, आई एम अ डॉक्टर, तो उसका Okay. ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये सब भी सचिन को जब वो इंजरी होता था ना तब सीखा। हाँ हाँ, सबको ऐसा ही. सबको पहले पता नहीं था टेनिस एल्बो क्या है, पर अगर सचिन को हुआ है तो फिर सबको पता है. अच्छा, क्रिकेट में कुछ इंजरी होती है विच इज कॉल्ड टेनिस एल्बो एंड दिस एंड दैट, एंड एवरीथिंग वाज सराउंडेड बाय सचिन इन क्रिकेट. Yeah, and it's so like funny because I think ना ऐसा भी होता था कि अगर आप कोई भी क्रिकेट एकेडमी में हो, and हम्म. then all of a sudden my brother used to come home and he's like, my toe is pain. I think Sachin had a toe injury and हम्म. he'd come home from the academy saying, oh, my toe is paining, my toe is paining. ये So सचिन को जो सच. इंजरी होता है ना, इंडिया में हर प्लेयर को इंजरी होता है. वो such was influence of his. Yes, true, very true. Yeah. So, So who like introduced you to cricket? So you watched cricket on TV and you were mm. influenced by Sachin, but who introduced you to Sachin? एक्चुअली पहले से क्रिकेट तो बहुत छोटा था तब से खेलना चाहता था. बट व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, माय फादर यूज्ड टू प्ले फॉर LIC. ही इज इन LIC. So he used to play local matches for LIC. So one fine day, I had my exams just coming that day. So I was studying then, एंड पापा ने बोला अगर तू आज पूरा दिन पढ़ाई करेगा तो यू कैन कम विथ मी लेटर इन द इवनिंग फॉर प्रैक्टिस. सो आई वाज सो ऐसा है कि इतना खुश था कि पूरा दिन पढ़ा. एंड दैट डे आई वेंट विथ हिम फॉर प्रैक्टिस. I bowled few overs and batted a bit. That was the first time I was wearing all the cricket gear, that is pads and gloves and helmet and everything. एंड पहली बार जब आप पैड पहनोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पहन के कैसे खेलते होंगे, मैं चल भी नहीं पा रहा था. सो
सब मैंने पहना, मैं बैटिंग करने गया and I played pretty well. So my father's team's captain and coach there was sitting, and he was asking my father that is he playing for the first time with all the gears on. So my father replied, yes. मेरे knowledge में जितना है, he is wearing it for the first time and playing. So they told that why don't you just get him in cricket and see where he reaches. So my father said replied that he has his exam coming. After the exams, I can join him in here itself. और देखते हैं क्या होता है. So we were going home and my father narrated the story to me that this thing happened. And I was so, मैं बोला पापा please let me play. I will come by bus or so and I will practice very hard and I will play. So after the seventh exams went well and जैसे ही खत्म हुआ वो दिन मैंने पापा को बोला okay so now I will be joining the camp right. के एक मिनट सबकी एग्जाम्स खत्म नहीं हुई, तेरी स्कूल की एग्जाम खत्म हुई अभी सबके, फिर समर कैंप आएगा तो तू ज्वाइन कर लेना. So I joined cricket camp then, and within first week of the camp, I was called for a selection. So in Gujarat, there is open selection trials. So I went there and I played. So this is how I got in cricket. That's so nice. It helps, no? Like having someone who's already Yes. playing, it kind of gives you a direction, like how to go Yes. about things. So my father used to bring all these new beds of LIC to our home, and वो बेड को नॉक करना पड़ता है before using it for the match. तो एक बार हैंगिंग बॉल होता था, तो मैं छोटा था तो दिस वाज माय टाइम पास के भाई ये बैट नॉक करना है. तो हमेशा नया बैट मैं ही नॉक करता था, ऐसा होता था LIC के लिए. Oh, actually, that was going to be my next question कि आपको ना अपना पहला किट किसने खरीद के दिया था? हाँ. So when I went in first, मेरा पहला, जब मैं ऐसे बोलते हैं कि ट्रायल्स, अगर आप सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए जा रहे हो, so that is the real cricket ऐसा. So वो ट्रायल्स में मेरा पूरा किट बैग, only the gloves and the guard was mine. Other than that, everything that show up, पैड ले लो, थाई पैड, हेलमेट, बैट, everything was of LIC. So Okay. LIC kind of has given me so much in that sort. Right. That's so Yeah, nice. yes. So when did you decide to pursue cricket as more than just a hobby? So I was playing a school tournament then. One of my uncles came there to watch the match, and he told my father that under 14 के selection trials हो रहे हैं. Why don't you let Chintan there? तो मोटेरा में ट्रायल्स हो रहे थे और मैं गया फर्स्ट डे ऑफ द ट्रायल्स. उधर जाके जो सिलेक्टर्स या कोचेस होते हैं उन्होंने पूछा, मतलब सबको ऐसे लाइन में खड़ा करते हैं. सो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू. आई टोल्ड दैट आई एम एन ओपनिंग बैट्समैन. ओके, सबने बोला पैड अप कर लो. ठीक है, मैं पैड अप करने गया, आया बैटिंग, एक दो तीन आई गेस 4 to 5 balls खिलाऊंगा and then they called the next one. So after 2 or 3 days of trials, I was selected as an opening batsman in my first trial. Oh, Bowler, हाँ. So that was the time that me and my father thought that okay, we can pursue this as a career. okay. So from opening batsman to a bowler who took 8 for 40 in a Ranji game, how did that Yeah. transformation happen? Actually, it happened in the same year itself. So, जैसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था. So, when under 13 state selection came, up till then I was a proper opening batsman. So
जैसे वो स्टेट का सिलेक्शन आता है तो सब डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स आते हैं. So it was getting a bit difficult for me to be an opening batsman. So I was standing in the corner and one of the selectors asked that you bowl or not. मैंने बोला हाँ sir, I bowl. I am a fast bowler, but they had told that you have to get in only in one this thing, or either batsman or bowler. तो मैं बोला ठीक है. सर ने मुझे बॉल दिया. तो वो टाइम पे सब कीपर्स ऑन द स्टंप्स खड़े, क्योंकि अंडर 13 में तो किसी की पेस इतनी होती नहीं है. तो जैसे मैं बॉलिंग करने आया, सब जो विकेट कीपर थे वो नेट से निकल गए, क्योंकि मेरे बॉल इतने फास्ट आ रहे थे कि वो लोग ऑन द स्टंप्स विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे. So that thing happened the same year itself. So as a transition हुआ कि district में as a batsman I played, and state matches आने तक I was a bowler, proper bowler. Okay. So out of bowling and batting, what do you like more? Uh, how can I say that? It's difficult for me to answer. But yeah, I guess I like bowling more than batting. Okay. If this was the questions in under 16s or 19 days, I would have told you batting, Okay. definitely. Okay. And who was your inspiration in terms of bowling? Bowling, I used to watch Bradley and Glenn McGrath bowl means for a long period of time. They were like inspiration, and especially Glenn McGrath, the way he bowled his line and length was that really inspired me. And after that, I watch many bowlers. Like सबसे वो थोड़ी थोड़ी चीजें वो पिक करनी होती है ना. It's kind of that for me कि ग्लेन मैकग्राथ की लाइन एंड लेंथ हो गया, डेल स्टेन स्विंग, ब्रेटलीज एग्रेशन, जहीर खान एब्सोल्युटली परफेक्ट सीम पोजीशन. तो वो थोड़ा थोड़ा सबका रहता है. तो बट Right. ग्लेन मैकग्राथ इज ऑन टॉप ऑफ देम. Yeah. Okay. I think one of my favorite bowlers is also Glenn McGrath. I think Glenn McGrath and Sean Pollock. These two Sure. were, Yeah, yeah. they were Growing up, I absolute loved legends. So, them. Yeah. yes, true. I think there was this one time, I don't know where it was. I think it was an exhibition event or something where they placed a coin on the pitch and Oh, asked McGrath to bowl. और वो 6 बॉल वो कॉइन को मारा पता है. And oh. I was like so blown away. I was thinking ये आदमी क्या है, मतलब ये क्या चीज है. पिन पॉइंट परफेक्शन यू कैन से. अगर ऐसा हुआ तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि उसके शोल्डर में भी मशीन है कि वो 6 के 6 बॉल वहां डाल पा रहा है. It was so amazing, and I think that day, I think I used to always be like Sean Pollock better hai ya Glenn McGrath, but after Yes. that day, the scales kind of tipped in McGrath's favor in my head. हाँ. Yes, he was the first bowler getting all those wickets. Yeah, wickets were preferable to him, you can say. But taking this 600 wickets in any format is like a dream, really. Yeah, true. So line and length is what inspired you is what McGrath kind of inspired in you, is it? Yes. Okay. And he was the first fast. Did you try to ever like copy his action and things like that? I tried to copy Braitley's action once because he was Okay. bowling so well in one series against England. But so I went to the coaching and I tried his bowling action. But तब कैसा था कि वो 15-16 साल के थे. मतलब ऐसा इतना वो नहीं होता था कि नहीं, खुद की अलग ही bowling action होनी चाहिए. You can't copy any's bowling action. But I tried once. इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर खुद की बॉलिंग एक्शन पे वापस आ गया. Okay. Yeah. Right.
और I just wanted to ask you, this is something I'm very curious about. What is हम्म different about cricket at the Ranji level and at the age group level? Like say so under 23 या वो जो CK नायडू होता है उसमें और हाँ रणजी में क्या डिफरेंस है? Under 23 is just a step away from Ranji Trophy because under 23 में कैसा होता है कि under 23 is the last age group. मतलब पहले कैसा है under 14 आता है, under 16 आता है, under 23 आता है and then there is last under 23. उसके बाद सब रणजी ट्रॉफी इज ओपन क्रिकेट, मतलब उसमें अगर अंडर मतलब 14 ईयर ओल्ड गाय भी खेल सकता है एंड यू कैन टेक अप टू एनी ईयर्स, मतलब 40 ईयर गाय भी खेल सकता है, ऐसा होता है. सो रणजी ट्रॉफी इज ओपन लेवल क्रिकेट, मतलब कोई भी उसमें खेल सकता है, बट दिस इज एज ग्रुप क्रिकेट के भाई इसमें इतनी एज तक वाला ही खेल पाएगा. राइट. नहीं, आई एम आस्किंग लाइक इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट क्वालिटी क्या ओके, डिफरेंट होता है? क्वालिटी क्वालिटी इज मतलब कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि इफ अ बॉलर इज बॉलिंग, यू आर अ बैट्समैन, इफ अ बॉलर इज बॉलिंग टू यू अंडर 23 में शायद 2 या 3 मतलब 1 या 2 ओवर में आपको एक लूज बॉल मिलेगा. तो रणजी ट्रॉफी में ऐसा होगा कि आपको 4 या 5 ओवर्स में शायद एक लूज बॉल मिलेगा. The quality differs in under 23 cricket and Ranji Trophy cricket. This is the only Okay. thing. थोड़ा आपको mentally strong होना पड़ेगा in term in Ranji Trophy cricket में. Under 23 में कैसा है कि आपको थोड़ा discipline यार उसमें भी होता है, बट रणजी ट्रॉफी इज नेक्स्ट लेवल, मीन्स आपको बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में. राइट. ओके. और and is this because you get more time to practice and reach Ranji level, or is that like more competition at the Ranji level compared to the under 23? Because end of the day you're still playing for your state, right? At under Yeah, 23. yeah. हाँ. No, I guess it's more competitive because उसमें if you are playing in Ranji Trophy, you're only one step away from playing for India. So Yeah. उसमें इतना कंपटीशन होता है कि आप खुद ही एरर करना कम चाहोगे. Right. So this is the main thing I guess कि इसमें इतना कॉम्पिटिटिवनेस होता है. Right. Okay. Um, I want to ask you a couple of questions about how you train and how you prepare for matches and things like that. Yes. एक busy season होता है तो आप उसका train कैसे करते हो? So training, I guess off season training is the most important training मेरे हिसाब से, क्योंकि वो टाइम कैसा है कि आपको प्रॉपर टाइम मिलता है कि आप अपनी जो लास्ट सीजन के एरर्स हुए हैं या कुछ भी आप अपने बॉडी पर वर्क करना चाहते हो. इफ यू आर गेटिंग ट्रेन bowling 4 or 5 hours spell, you can train in that time to bowl 6 or 7 or 8 or 10 over spell. So I think off season training हमेशा important रहता है. तो उसमें कैसा है कि if I am training for off season training, तो मैं ऐसा करता हूँ कि I would go to 3 day strength session, means 3 day for gym and all, and 3 दिन मेरा ऐसा रहता है कि I would go for running session for I would say about 1.5 months or 2 months. ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ मैं कि वो टाइम पे मैं पूरा अपने फिजिक पर या मेरी एंड्योरेंस पर ही वर्क करूँ. This comes when you have off season like May June month. उसके बाद ऐसा होता है कि जुलाई अगस्त मंथ में आप ज्यादातर स्किल पे चले जाते हो. व्हेन यू आर बॉलिंग, व्हेन यू आर बैटिंग, तो वो टाइम आपको ज्यादा टाइम देना है आपके स्किल के ऊपर. तो बॉलिंग 8 ओवर्स अ डे, बॉलिंग 15-20 overs a day sometimes in match or so, if you are playing a practice match or so. Then बैटिंग करते हैं तो बैटिंग for I would say probably half an hour, an hour. तो वो
वो सब चीजें होती है, ऐसे ट्रेन करते हुए जाते हैं। बट आप व्हेन मतलब आप सीजन के नजदीक आते जाते हो, तो वो टाइम पे आप प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए, इतना आपको प्रैक्टिस करनी है। सो Okay. दैट वे आई ट्रेन के फिर मेरा जब सीजन पास में आता है, देन आई एम सेटल्ड, आई हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट अगर मैं नेट में 10 मिनट भी बैटिंग कर लूंगा, तो आई एम Mm-hmm. गुड टू गो इन मैच। Okay. Um, or like how much do you focus on recovery like during a season and in the off season? What is the focus on recovery like between training? Recovery, I guess recovery is the most important thing if you are playing at certain level. Means after under 23s or Ranji Trophy cricket, so recovery is the most important thing. And nowadays you have many ways to recover your body. There are ice baths, measures after you and everything. तो रिकवरी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ वो ट्रेनिंग कर कर करके आप वो घोड़े नहीं बन सकते। अगर आप ट्रेनिंग पूरा दिन करते रहोगे तो आप गधे के गधे रहोगे, ऐसा नहीं है। बट फॉर यू रिकवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट डे, अगर आपको नेक्स्ट डे फ्रेश रहना है फॉर यू टू परफॉर्म वेल, तो Yeah, रिकवरी यस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। right. Um, and I want to ask you a little bit about the Cricket Association, GCA. How is GCA organized in terms of different divisions, and how does one progress through the divisions? सो जीसीए आई गेस पहले, सबसे पहले आते ग्रास रूट लेवल पे आता है स्कूल टूर्नामेंट्स, in which I guess many 40-50 school play for against each other. After that, they progress to inter districts. The guys who have performed in school tournaments, they progress to inter district matches. तो इंटर डिस्ट्रिक्ट की मैचेस होती हैं। देयर आर आई गेस 8 or 10 districts in Gujarat. They play against each other. The best guys from there get selected for under 20 under sorry 35 probables, एंड Okay. उसका पूरा कैंप होता है फ्रॉम यू से जैसे हम बोलते हैं ऑफ सीजन कैंप होता है जो, तो 35 probables for the whole season are getting selected there and playing against means inter state matches and everything. So वो Yeah. 35 probables are for the whole year for GCA. तो Okay. ऐसे this way GCA works. Okay. So is it like 35 probables for across the three formats, or is it Yes, format yes, specific? yes. No, no, no. The 35 probables are for all the formats. There are specific players who now play for only Ranji Trophy, or some players are only for T20 and so on. So, but 35 probables are the main means from them they get selected for Ranji Trophy or T20 or one days. Right. Okay. It makes a lot of sense. Yeah. So I think you debuted first in T20, right? Yes, yes. Yeah, and then you went to List A cricket and then Ranji, or did I get that N- wrong? No, You no, went to no. Ranji and then List A, right? Ranji, yes. Then to list a cricket. Okay. So which format do you like best? All three. No, but I like red ball cricket very much, because it's like you are tested day in day out. एक ऐसा सेशन नहीं होता जहाँ पे you can relax a bit. If you are relaxed, then वो सेशन अगर आपका हाथ से गया and you are out of the game. And I have seen this now many a times that थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो मैच आपके हाथ में से गया, ऐसा समझ लो। Okay.
Right. Can you tell me how was your first, like your debut Ranji game? What were your feelings, and what did you go through? What are your memories from that game? Uh, Very first Ranji game, and how I played was an interesting story. Okay. I was in under 23 also, and I was a member of Ranji team also then. So I was coming back from means on the second or third day, I was going for my under 23 match. One guy Okay. got injured, and Parthiv bhai was captain then. He told me that I was just about to reach the, I mean, I was just about to board the taxi that day. I had to flight to catch on, and I was just about to मतलब सब सामान रख रहा था मैं, और पीछे से आवाज आई कि डोंट गो, यू हैव टू प्ले द नेक्स्ट, नो कम हियर. मैं गया उधर एंड सेड आपको जाना नहीं है, आई थिंक यू आर प्लेइंग द नेक्स्ट मैच. So I Okay. was like, oh, मतलब अंडर 23 से सीधा मतलब रणजी ट्रॉफी मैच खेलना है, ठीक है. Okay, so I stayed with the team. The day this match was happening, me, Parthiv bhai, and RP Singh was in our team also that day, at that time. So we were coming in lift down, and Parthiv bhai told that you are gonna play this match, okay? So be ready. uh, Okay. all the butterflies, all my ऐसा लग रहा था कि हार्ट 72 बीट्स पर मिनट नहीं, वो 110 120 बीट्स पे चलेगा, ऐसा लग रहा था. तो आई वेंट इन, मतलब ग्राउंड पे गया, वार्म अप सब किया, एंड हम लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, तो सब नर्व सेटल हुए थोड़े. ओके, बैटिंग में गया. वेरी फर्स्ट बॉल आई गॉट आउट, वेरी फर्स्ट बॉल. एक तो इतना, Oh, आई सेट फॉर ऑलमोस्ट for 20 to 30 overs. Very first ball I got out and came back. ठीक है, और ये होता है, ओके, हो गया. बॉलिंग करने गए. Bowling, I bowled something about 20-25 overs. I didn't got a wicket. Second inning okay. गया. Second inning, Kuldeep Yadav was bowling against me. उसने बॉल डाला, मैंने उसे शॉट मारा, जोर से शॉट मारा, स्ट्रेट बैक टू हिम. वेरी फर्स्ट बॉल इन द सेकंड इनिंग इटसेल्फ. Okay. दोनों इनिंग में जीरो पे आउट, और दोनों इनिंग में विकेट भी नहीं. So मतलब ऐसा लगा, ऐसा हो रहा था कि when I was coming back, this is the end for me. Now I can't play Ranji Trophy, and all sorts of thoughts coming in my mind and everything. Right. So Parthiv bhai and coaches and everything. So you have bowled well. Don't get disheartened by this. होता है, सबके साथ होता है. सबके मैसेजेस आने लगे कि मारवन अटापट्टू भी, उसको इंटरनेशनल में श्रीलंकन क्रिकेटर मारवन अटापट्टू, Yeah. उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रन करने के लिए भी 6 साल लगे थे, ये वो. मैं बोला मैं 6 साल वेट नहीं कर सकता, 6 साल वेट करूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा. So all sorts of thing happened with me, and funny part was bowling. This मतलब first और second innings में total होके मैंने कुछ 40-45 overs डाले थे, and the second match I played, I bowled around 30 overs. 70 overs तक मुझे एक भी विकेट नहीं था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. ऐसा Okay. लग रहा था कि इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं हो सकता. But Yeah. I was lucky then that RP bhai, Jasprit Bumrah, Roosh, every mean seniors थे मेरे साथ. So they were like, okay, it happens. Don't get disheartened. देखो, you're bowling well. That is enough for us, and you will get wicket. Don't worry. तो Right. that was the thing कि भाई हाँ ठीक है, चलो bowling अच्छी हो रही, no issues. Okay. I think that encouragement is very important, right? कि Yes, आपके कैप्टन आपको क्या बोलता है जब आपको सफलता नहीं मिलती, वो डर करता है in terms of keeping your true. confidence still, you know, from shattering. I think it's very Yes, important. Yeah, and very I think actually, वो people बहुत kind of, important है.
हाँ, उसको ज्यादा इतना वेटेज ही नहीं देते कि आपको क्या बोला जा रहा है, वो कुछ भी बोल देते हैं लोग। और दे डोंट लाइक बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलना, ये सोच के कभी लोग कभी सोचते नहीं है, बट इट्स सो इम्पोर्टेंट हाँ बिकॉज आप एक you know just with what you're saying you can either make or break someone. It's so important. it's yeah, true, I Yeah. agree with that. So from your first match Hmm. to um, like आपको लगा कि आपको अभी वापस नहीं मिलेगा चांस एंड ऑल, बट हाउ डिड यू गेट योर नेक्स्ट चांस टू प्ले? Luckily, मुझे नेक्स्ट मैच आई प्लेड वाज रणजी ट्रॉफी फाइनल। एंड ओके। आप सोच सकते हो कि कैसा प्रेशर रहा होगा, क्या क्या दिमाग में चल रहा था। आई डिडंट स्लीप फॉर द होल नाइट। मैच से पहले ऐसा ही लग रहा था कि मेरा वापस से डेब्यू हो रहा है। बट बट द थिंग वाज के मैं जैसे बोला कि सब सीनियर्स थे और सब थे, तो थोड़ा वो प्रेशर हट गया मेरे पे से, क्योंकि मैं ऐसा सोचने लगा कि मैं बॉलिंग करूंगा, उसके पहले तो ये सब बॉलिंग करेंगे, तो ये सब विकेट लेंगे, मैं तो फर्स्ट स्टेज में आऊंगा तो सब सेटल हो जाएगा। मतलब वही सोच सोच के मैं पूरी मैच खेल ली मैंने वो वाली। तो ओके। वो बट फिर मैंने जैसे फर्स्ट बॉल डाला एंड द विकेट वाज अ बिट हेल्पफुल इन द फाइनल्स, रणजी ट्रॉफी फाइनल्स अगेंस्ट मुंबई। विकेट वाज अ बिट हेल्पफुल, तो एक दो बॉल मैंने बैट्समैन को बीट किया, फिर एक स्नीक लगी, कैच नहीं हुआ। तो थिंग्स मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि थिंग्स फॉलन इनटू प्लेस फॉर मी इन दैट मैच। राइट। तो फिर मुझे फर्स्ट विकेट मिला श्रेयस अय्यर का, तो वो धीरे धीरे सब सेटल होता गया और फिर मुझे मैच अच्छी गई ऐसा। That's so cool. Or and who was your first wicket in List A cricket? List A cricket, I guess it was Ishwar Pandey of MP. Okay. I was bowling in death and he came into bat, and I guess he got bowled in Yorker also. So that was my first wicket. Okay. So from I think when and what was the like in which match did you actually make your first runs though? Like substantial amount of runs. Uh, First, I scored in my second this first class match. I scored 20 runs against Tamil Nadu, which was a formidable side then. And T. Natarajan and every player, Vijay Shankar, and everyone playing into it, Dinesh Karthik and everyone. So I scored 20 runs, but it was like मतलब मैंने proper Akshar was batting against me, तो थोड़ा वो Okay. स्टैंड दे के एंड एवरीथिंग, सो आई प्लेड विद हिम एंड आई स्कोर्ड 20 रन्स ऑफ लाइक 85 balls or so. So Okay. that was my first. Uh, I got first runs in that match, and like that was my some substantial runs in first class cricket. Right. और आपका पहला 50 कब आया? Did your first 50 come in Ranji or in white ball cricket? No, my first 50 came in Ranji cricket. I was playing against छत्तीसगढ़ के सामने था, Okay. एंड ऐसा था कि सेकेंड डे बैटिंग, मतलब फर्स्ट डे हमने पूरा बैट एंड बैटिंग कर रहे थे, एंड कुछ टी टी या ऐसा कुछ सेशन हुआ, एंड मैं कुछ 14-15 रन पे था। एंड जैसे अंदर Okay. गए, हमारे कोच ने बोला कि वी गोना डिक्लेयर, तो इतनी ओवर्स है आपके पास। तो मैं बोला इतनी ओवर्स है तो मुझे तो मार के खेलना पड़ेगा। तो जैसे गया, थोड़े रन आने स्टार्ट हुए और एक ही ओवर में मैंने कुछ 29 रन किए थे, 4 सिक्सेस एंड 1 बाउंड्री, मतलब 5 बॉल और बाउंड्री भी थोड़े जाता, पर थोड़े से, तो वो टाइम पूरा ऐसा लग रहा था कि
सिक्स भी हो सकते हैं एक ओवर में, पर वो मैच में मेरा 50 आया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगेंस्ट छत्तीसगढ़। Okay, that's so cool. अच्छा, बहुत हमने ये प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में बात कर ली, बट हैव यू हाँ, प्लेड गली क्रिकेट? गली क्रिकेट, ओ आई यूज्ड टू लव गली क्रिकेट। मतलब ऐसा है कि सुबह को घर पे जब समर वेकेशंस होते हैं तो पहले वेरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वाज गली क्रिकेट। सुबह 7 से 10 बजे तक या 11, जब तक घर वाले बुलाए नहीं तब तक गली क्रिकेट खेलना है। फिर घर पे आके वीडियो गेम दोपहर को, क्योंकि दोपहर को लाइक बहुत गर्मी होती है तो दोपहर को वीडियो गेम्स, और फिर वापस शाम को से स्टार्ट हो जाता था। तो लेके रात को भी इवन वो बोलते हैं ना कि एक से आउट, और अगर आपके बैट पे लगे तो एक वो कट ए रन बोलते हैं कि कट लगे, अगर आपको भागना ही है कंपलसरी, नहीं भागे तो आउट। तो वो सब तो हम लोग बहुत खेले हैं। यस, मैंने तो बहुत गली क्रिकेट खेला है। ओके, तो आप जब गली क्रिकेट खेल रहे थे तो आप लाइक व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग यू रिमेम्बर अबाउट प्लेइंग गली क्रिकेट, एंड डू यू स्टिल प्ले गली क्रिकेट? फनीएस्ट थिंग, फनीएस्ट थिंग तो नहीं है, बट मैंने बहुत सारे झगड़े किए हैं कि हमारे कैसा था कि सोसाइटी में ना हमको खेलने नहीं देते थे। मतलब वो कांच टूट जाते हैं या फिर तो एक एक अंकल थे हमारे वहाँ, तो व्हेन आई यूज्ड टू हिट, अगर उनका कांच फूटा तो जाके सबसे पहला, और आई वाज कितना मैं मतलब 8-10 साल का ही था, छोटा ही था, और झगड़ता ऐसे था मैं उनके साथ कि मैं कांच डलवा दूंगा आपको, आप ये नहीं नहीं कर सकते, हमारा बॉल कैसे रख सकते हो आप, एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत झगड़े किए हैं। तो वो एक चीज थी कि हाँ, अगर खेलना है तो फिर बिंदास सोसाइटी में खेलना है। और गली क्रिकेट तो और अभी तक, यस, अभी तक मैं गली क्रिकेट खेलता हूँ। संडे संडे अगर हमारे सब फ्रेंड्स, इफ मीन सबकी ऑफिस रहती है, बट इफ दे आर एट होम एंड एवरीथिंग, तो सब शाम को मिल जाते हैं, तो या वी स्टिल प्ले गली क्रिकेट। एंड द बेस्ट टाइम वी गॉट वाज लॉकडाउन। लॉकडाउन में पूरा टाइम हमने गली क्रिकेट खेला है, लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। ओके, ये मतलब आपका बहुत, आई थिंक इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी तो यस, ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है ना कि हाँ, if you are, yeah, so we have this state bank staff. My grandfather was in state bank, so we are living in this state bank staff society. So this is ओके, a cooperative society. So I have my age group friends, I mean सब मेरे जितने ही हैं। और लॉकडाउन में तो हमें मतलब प्रॉपर वो टाइम मिल गया था कि सब गेम खेलने का। एक सुबह वॉलीबॉल खेलो या फिर गली क्रिकेट चालू होता रहता था, बैडमिंटन चालू रहता था। तो लॉकडाउन में हमने ये सब बहुत किया है। यस, अरे ऐसा है तो लॉकडाउन आया गया पता ही नहीं चला होगा ना? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। और रात मतलब ऐसा मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि दिन कैसे जा रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा था। सुबह को ऐसा सब चलता था, रात को लेट नाइट मूवीज चल रही थी, कोई ना कोई किसी फ्रेंड के घर जाके या ऐसा कुछ, मतलब सोसाइटी में ही। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। राइट, तो आपको ना ये लॉकडाउन और 2020 और 2021 से आपने क्या सीखा? लॉकडाउन मतलब सबसे मतलब मस्ती इम्पोर्टेंट चीज, वस्ती बहुत हाँ, ज्यादा हो गई मस्ती, लेकिन मस्ती तो हो हाँ, गई, पर एक चीज मुझे लगी कि टाइम इज वेरी प्रेशियस। क्योंकि मैं जब आई वुड से लॉकडाउन हुआ जो दिन, आई गेस 20th मार्च को,
वो दिन मैं निकलने वाला था टू जॉइन रेस्ट ऑफ इंडिया टीम इन ईरानी ट्रॉफी। ओके। तो वो दिन ही मैं खुद ड्राइव करके जाने वाला था राजकोट टू जॉइन द टीम ऐसा। एंड कुछ 19 मार्च को आवर प्राइम मिनिस्टर टोल्ड दैट एक दिन का सेल्फ मतलब वो कुछ था कि खुद से लॉकडाउन नहीं हुआ था बट आपको घर पे रहना है। तो हमारे ग्रुप में वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि भाई हमारी मैच थोड़ी पोस्टपोन हुई है तो यू हैव टू, हम जब बोले तब आना है। और 22 मार्च से तो लॉकडाउन ही हो गया। तो वो टाइम थोड़ा ऐसा फील हुआ, आई वुड हैव प्लेड इन रेस्ट ऑफ इंडिया टीम इन ईरानी ट्रॉफी और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ। तो तब ऐसा लगा कि टाइम इज वेरी प्रेशियस। मतलब जब आपको वो मोमेंट आए ना तो आप मतलब इसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा था बट तो भी एक वो फील थी कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई टू प्ले इन रेस्ट ऑफ इंडिया टीम। राइट। यस। Yeah. It's so important to, I think, reflect and kind of understand कि हमने क्या सीखा। नहीं तो यस। हम बस वो मस्ती के बारे में ही सोचते रहे ना तो हम्म। वो रिफ्लेक्शन अगर हम नहीं करते तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। और I think this 2 years, I think, has taught this world so much. So much, yes, definitely. Especially, yeah, especially about, the importance of like making use of your time and basically living in the moment is also very important क्योंकि पता नहीं कब टपक जाओगे। I'm so like, हाँ कुछ सही, भी हो ट्रू सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू, Yeah, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। yeah. तो आपके साथ तो you were the one who I'm assuming आपके गली क्रिकेट वाले जो टीम है आप ही वो बैट बॉल सब आप ही लेके जाते थे। हाँ सब मेरा होता था, मतलब बैट स्टम्प बॉल सब मेरा ही हाँ, होता था और इसलिए पहली बैटिंग मेरी होती थी। पता था मुझे यार आप जैसे लोग ना मतलब मेरा एक दोस्त था वो ही लेके हाँ। आता था सब कुछ। और ऐसा होता था कि उसका हम सबको एक क्या होता है पहले बॉल पे आउट हो गया तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि ट्रायल बॉल है। लेकिन अगर हाँ वो ट्रायल होता वाला था ना पूरा ओवर उसका ट्रायल ओवर होता था। है। वो तो ऐसा ही रहता है, अगर वो बोलता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, सेम थिंग। और आउट हो आप भी ऐसे थे क्या कि आउट हो गया अच्छा ठीक है अभी मैं चल रहा हूँ ओके बाय। नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा होता था कि अरे मेरी मम्मी मेरी मुझे दूध पिला मतलब बुला रही है, मुझे दूध पीने मतलब चाय पीने जानी है, सो आई एम गोइंग। ऐसा होता था। हाँ वही चीज तो वही है ना कि आप आउट हो गए फिर तो अभी आपको खेलना चलो नहीं है अभी अभी मैं बैठ जा के रहा हूँ फील्डिंग घर। कौन करे। हाँ सही सही, नहीं बट मैं इतना होता था कि वापस आके सामने वाले को बैटिंग दे देता था। ओके। इसलिए देखो, इसलिए मैं अभी बॉलर हूँ ना, इसलिए ही अभी बॉलिंग कर रहा हूँ, इतनी सारी फील्डिंग कर, इतनी सारे और भाग के बॉलिंग करनी पड़ती है। शायद वो सब मेरे फ्रेंड ऐसा बोलते हैं कि हमको जो इतनी वो फील्डिंग कर रहे हैं तूने, इसलिए अभी तो इतनी कर रहा राइट। हाँ मतलब कर्मा होती है ना एक है। हाँ चीज। वही वही। सेम सेम। राइट। तो ठीक है एक सीरियस सवाल सा पूछती हूँ। हाउ डू ओके। यू कोप विद सक्सेस एंड फेलियर। जैसे आपने बोला ना अभी के प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक दैट इज द थिंग फॉर मी। क्योंकि मुझे एक याद वेरी मतलब वो आज अभी भी हमेशा मैं याद कर रहा हूँ, 2018-19 सीजन चल रहा था रणजी ट्रॉफी का। एंड आई हैड प्रेटी गुड सीजन्स बिफोर दैट, मतलब 2 साल मुझे आई गॉट सम फर्स्ट ईयर आई गॉट 28 और 28 विकेट्स इन 6 or 7 मैचेस। एंड दूसरा साल भी अच्छा गया था। एंड दिस थर्ड ईयर आई प्लेड 4 मैचेस एंड आई गॉट ओनली 1 विकेट। तो मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था, हमारी मुंबई के सामने मैच थी एंड बिल्कुल ऐसे कि क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, विकेट्स क्यों नहीं आ रहे मुझे।
तो आई हैड अ चैट विद माय फादर कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लाइव मैच भी थी, तो उन्होंने बोला कि तू थोड़ा ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर बॉलिंग कर रहा है, यू कैन कम अ लिटिल बिट इनसाइड एंड सो एंड दूसरे दिन मैंने बॉलिंग किया एंड आई गॉट विकेट्स एंड आफ्टर दैट आई गॉट विकेट्स, मतलब उस फिर फर्स्ट 4 मैचेस में मैंने एक ही विकेट ली थी, फिर नेक्स्ट 4 मैचेस में मैंने 20 विकेट्स लिए एंड आई डिड प्रीटी वेल दैट सीजन। बट वो फर्स्ट 4 मैचेस जो चल रही थी, तो एक आपको पता चलता है ना कि सब नेगेटिव्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब हर एक लोग आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, उस मतलब ऐसा कि चिंतन को विकेट नहीं मिल रही है वो, तो वो सब वो माइंड में चलता रहता था। तो वो साल मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी कि आपको प्रेजेंट में रहना है। आपका एक ऐसा नहीं है कि आपने विकेट्स पहले ली है तो हर टाइम आपको विकेट मिलेगी। और सेकंड चीज इसकी ये है कि अभी नहीं मिल रही तो ऐसा भी नहीं है कि आगे जाके मिलेगी नहीं, आपको विकेट्स तक अभी तो, इफ यू आर डूइंग योर थिंग्स राइट, सक्सेस विल डेफिनेटली कम, इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली कम। तो ये चीज एक मैंने वो टाइम बहुत अच्छे से सीख ली कि एंजॉय द मोमेंट, लिव द मोमेंट, एवरीथिंग विल फॉलो। ऐसा भी नहीं Okay. है कि अगर आज खराब है तो कल भी खराब होगा, अगर आज अच्छा है तो कल खराब होगा, वापस अच्छा होने ही वाला है। Right. तो वो एक चीज मैंने सीखी थी। यस, That's so nice. Because it's very important. Success, especially, failure से कैसे कोप करना ये सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, and हाँ, there's so many resources to teach you how to cope with failure. But फेलियर, यस। coping with success, that is also very हम्म, important. क्योंकि अगर वो आपके सर में चढ़ गई और आप हाँ, कंप्लेसेंट हो गए, तो it can lead you down a very dangerous path. तो success के साथ deal करना is also equally important, and it's good to know that you put some thought into that and all that. So yeah, great. यस, यस। तो वो बोलते हैं ना कि अगर सक्सेस अगर आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं तो थोड़ा कम्प्लेसेंसी आ जाती है। तो आई गेस ये चीज अच्छी है कि आपको फेलियर भी आ जाने चाहिए अर्ली इनटू योर करियर, तो आपको एक वो आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि नहीं, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, ये चीज भी हो सकती है। सो Right. दैट हैज हैपेंड विद मी, सो मैं अभी रेडी हूँ आगे के फ्यूचर के लिए। यस। Okay. So what is your cricketing dream, and वो अचीव करने के लिए आपको किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है? Cricketing dream for me ultimately is to wear that blue jersey and obviously white jersey of Team India. वो एक ड्रीम है कि हाँ, I want to represent my country in all the three। तो और मुझे लग रहा है कि अभी तक वो नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी तक एक एक भी बार वो हाईएस्ट विकेट टेकर या ऐसे नहीं बना हूँ, इसलिए आई गेस। तो वो एक ये अब इतना परफॉर्म करना पड़ेगा कि एवरी सिलेक्टर शुड थिंक दैट यस ही इज कैपेबल ऑफ दिस एंड इसको खिलाना ही पड़ेगा अभी। तो वो एक चीज है कि हाँ, परफॉर्म वेल, परफॉर्म टू योर फुलेस्ट and things will fall into place. Okay. Cool. Awesome. Or I want to open the floor to everyone else present here. Anyone want to ask any questions? हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगा, ये आपको आईपीएल ड्रीम है क्या? मतलब इंस्पिरेशन चाहते हो आईपीएल का? डेफिनेटली, डेफिनेटली दैट, मतलब वो भी एक ड्रीम है मेरा टू प्ले आईपीएल, क्योंकि आई थिंक आईपीएल इज अ गेट टू इंडियन टीम एज वेल। तो यस, डेफिनेटली वो भी एक है मेरा ड्रीम टू प्ले इन आईपीएल। और कौन सी फेवरेट टीम है आपकी?
favorite team for Dhoni only it's CSK, but ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट अभी तक ऐसी कुछ है नहीं, बट फॉर धोनी CSK है, मतलब धोनी के लिए वजह से मेरी टीम फेवरेट है CSK। अच्छा, थैंक यू। Okay. So I did get one question on WhatsApp. आपके क्रिकेटिंग जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट है जो आप बार बार रिलिव करना चाहते हैं? रिलीव या डेफिनेट एक दो मोमेंट है जो मैं एक करना चाहता हूँ, ये रिलीव करना चाहता हूँ। फर्स्ट वाज रणजी ट्रॉफी विनिंग मोमेंट जब हम चैंपियन हुए थे 2016-17 में, and second is the 2019-20 our semi-finals against Saurashtra team। उसमें मैंने मतलब सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते आई गॉट 5 विकेट्स इन जस्ट 4 और 5 ओवर स्पेल, मतलब दे वेर very ahead of us in the game, and second innings में I went on and bowled like हमने कुछ डे एंड तक हमने 12 या इतनी ओवर्स डाली थी, उसमें 5 to 6 ओवर्स आई बोल्ड और मैंने 15 रन में 5 विकेट आउट कर दिए थे, बट इवेंचुअली वी वेंट ऑन टू लूज दैट मैच। तो वो एक मोमेंट है कि अगर अगर वो टाइम ट्रैवल कर सके ना तो ऐसा ऐसा हो सके कि वो मैच हम जीत जाए और हम लोग वापस फाइनल में पहुंचे। वो तो दिस आर द टू मोमेंट्स आई रिलीव अगेन एंड अगेन। और सेम डे आई स्कोर्ड 63 आल्सो इन दैट मैच, so these are the two moments. That's awesome. I think there's a question on chat. अरे ये सुचरिता है. Okay, she's asking what is something that people will be surprised to know about you? People would be I guess I'm a big foodie. Okay. I just love to eat, means definitely profession की वजह से I can't eat junk or I can't eat many things, but I'm a big foodie, I'm a big sweet lover। अगर मेरे Okay. घर पे कोई भी स्वीट्स आते हैं तो अभी तो मेरा प्रॉपर डाइट चल रहा होता है या ऐसा सब चल रहा होता है, बाकी आई जस्ट कांट रेजिस्ट। Okay. So what is that one sweet that you can't resist, even if you're on a diet? Even there are many sweets, means but not a sweet, but I can't resist, means अगर वो आम रस रखा हुआ है, means that mango this तो वो अगर मेरे सामने है, आप कितनी भी बाउल्स ला दो, मैं खाता रहूंगा, ऐसा है। एंड मैं अपनी माँ से हर टाइम वो डीप फ्रीज भी करवाता हूँ, इवन इफ देयर इज नॉट अ सीजन ऑफ मैंगो और सो आई कैन हैव इट, बिकॉज ऑफ दैट आई टेल हर टू डीप फ्रीज इट ऑल्सो। Okay. Okay. I think she's saying मैं भी same हूँ. Okay. Right. Any other questions, guys? आप अपने गुजरात टीममेट्स के बारे में अभी क्या बताना चाहोगे? मतलब उधर से काफी इंडिया के लिए भी खेलते हैं ना? हाँ। So Gujarat cricket, I mean, for like past 5-6 years now is very much growing, क्योंकि पहले इतना सबको नॉलेज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस और ऐसा सब नहीं था।
But after we won our this Ranji Trophy in 2016-17, सबको बहुत सब प्रोफेशनल हो गए. Means every player is keeping their own personal trainers. They are training with them. Many are more fitter than before now. तो वो एक चीज है कि और पहले कैसा था कि सब लोग ऐसे देखते थे लाइक मैनी इयर्स बिफोर कि अगर गुजरात की टीम सामने है तो चलो ठीक है, हम लोग 2-3 दिन में मैच खत्म कर देंगे और फिर एक दिन घूमने जाएंगे. ऐसा सोचते थे इन रणजी ट्रॉफी. बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली अपोजिट. नाउ वी एज अ टीम लाइक टू डोमिनेट अदर टीम्स. सो वो एक चीज आ गई है गुजरात टीम में, आई वुड से. अभी करंट डोमेस्टिक सीजन कैसा था आपका? अच्छा फॉर्म था क्या? एक्चुअली कैसा था कि ये साल थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड आप बोल सकते हैं ऐसा चल रहा था, क्योंकि मैनी प्लेयर्स वेर कमिंग फॉर अंडर 23. So we had means like a 50-50 season this year. We qualified in the T20s for quarterfinals, but in Vijay Hazare we played two brilliant games and we lost 3. But 2 games were like उसमें अगर ऐसा हो रहा था कि हर मैच में कोई डेब्यू कर रहा है. And in Ranji Trophy as well, I guess this was the year that most number of debuts हुए होंगे हमारे टीम के लिए. तो वो एक चीज थी कि वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड की वजह से हमारा सीजन was not that much good. Definitely we need to work on that, but I am pretty sure that next season would be pretty good for us. ललित्या, आप कुछ बोलना है तो बोल. मेरे तो क्वेश्चन हो गए. थैंक यू. Okay. Okay, I think there's another question on the chat. They're asking किसी ने Yeah. आपको तंग किया क्या सबसे ज्यादा? I think you spoke about people who motivated you, right, when you Yes, yes. लेकिन आपको किसी ने तंग किया कि आप like did anyone pull your leg या हंसी मजाक सबसे ज्यादा कौन करता है आपकी टीम में आपके साथ? हमारे ऐसा है कि हम रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं. मी, अक्षर पटेल, मनप्रीत जुनेजा एंड ध्रुव रावल. वी आर लाइक हम चारों जन पूरा दिन साथ में ही होते हैं. और ऐसा ये टांग खींचने सबसे ज्यादा मेरी खींचती है. इफ अक्षर एंड मनप्रीत एंड ध्रुव इज इन द रूम, कुछ ना कुछ मेरे बारे में चलता ही रहता है कि हाँ मैंने ऐसे फील्डिंग कर दी. सब मतलब पूरा दिन मेरे पे ही हंसते रहते हैं कि देखे ये बॉलिंग डाल के कितना ऐसे थक के जा रहा है, ये वो. एंड मतलब ये टांग खींचने वाली बात है. आई विल टेल यू वन इंसिडेंट. ऐसा था कि मैं एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने गया और उधर मुझे ऐसा बोला गया था कि किड बैग लेके मतलब लिए बिना आना. You are not playing a match, but for the sake of just being 15 members, you have to be in the team. तो Okay. मैं गया उधर. कुछ 4 बजे सुबह को मैं पहुंचा. 7-8 बजे प्रैक्टिस थी. मैंने कुछ मतलब मैं सोया भी नहीं. स्ट्रेट अवे वेंट इनटू द प्रैक्टिस, केम एंड पूरा दिन वो दिन सोया. और नेक्स्ट डे मैच थी. तो मैं ऐसे टीम हर्डल में यस यस मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बीइंग 15 मेंबर में टीम में हूं, तो आई वाज ऑल दैट चार्ज अप एंड ऑल. तो टीम हर्डल हुआ. तो अक्षर वाज कैप्टन देन. Okay. तो उसने ऐसा बोला वेलकम बैक चिंतन गजा. मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ वो मेरे साथ रूम में भी हंसी मजाक कर रहा है, इधर भी हंसी मजाक कर रहा है. और बोले कि वेलकम बैक चिंतन गजा
एंड फिर उसने सब वो मोटिवेशनल बोला स्पीच, एंड देन उसने 4 जो बाहर बैठे थे उनका नाम लिया। मैं बोला इसने Okay. मेरा मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं भी तो बाहर ही होऊंगा क्योंकि मुझे तो खेलना नहीं है ये वो। तो सब आके वापस ऐसे वो वेल डन वेलकम बैक, ये वो। मैं सोच रहा हूँ, एक साइड में सोच रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, और दूसरी साइड ऐसा सोच रहा हूँ मैं बैटिंग करने पैड वैड किसके पहन के जाऊंगा। सो दिस वाज द थिंग, मतलब ऐसा चल रहा था सब माइंड में कि मैच तो खेलनी है पर मेरे पास कुछ सामान ही नहीं था। Okay. वो बिना फीडबैक के भी मैं मैच खेला हूँ रणजी ट्रॉफी में। ये कुछ ज्यादा ही टांग खींच ली आपकी तो। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी के बिना फीडबैक के रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास मैच खेल लूंगा मैं। Right. Okay, I have another question on chat. I think this will probably be the last question. Question from Raghu. How would you react to an aggressive Australian team in Australia if you play for India? When you play for India. Yeah. I think the best answer to them is with the ball or with the bat. You means Australians ऐसे होते हैं, उनसे बोल के अगर आप करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, because they are after you every time. बट जैसे लास्ट सीरीज में जैसे ऋषभ पंत एंड एवरीवन प्लेड, Rishabh Pant, Washington Sundar, and everyone. So best answer to them is with the bat or the ball. तो मैं भी सेम चीज करना चाहूंगा कि या मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। मैं अभी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में भी, अगर आपने देखा होगा तो विकेट के बाद बहुत लेने के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, बट इनसाइड ऑफ मी ऐसा ही सोचता हूँ कि नहीं, शांत रह के खुद के बैट बॉल से आंसर दे के आपको निकल जाना है। Okay. That's cool. Okay. Gargi is saying, please, ये एक आखिरी पूछ लेना. हाँ, What is the best sledge that you've ever come across? बेस्ट स्लेज, बेस्ट स्लेज एक्चुअली मैं बहुत एंटरटेन नहीं करता स्लेज को, क्योंकि बहुत मतलब एवरी टीम दे आर प्लेइंग फॉर विनिंग, तो सब दे आर आफ्टर अस एवरी टाइम। बट या मुझे याद है कि यस, बेसिल थम्पी रिसेंटली बेसिल थम्पी वाज प्लेइंग अगेंस्ट अस इन दिस रणजी ट्रॉफी मैच, and I bowled a bouncer to him, and he told that, mate, you are going to bat as well. Remember that thing. If I am bowling, I'm pretty sure that I am coming into bat at 8 or 9. You are also going to bowl to me. तो फर्स्ट बॉल उसने डाला बाउंसर इतना जोर से कान के बाजू में से कि मैं वाला बच गया, and he came and everyone was after me that this is the speed you are facing, and कितना सारा बोल के मैंने बहुत इतना ध्यान ही नहीं दिया, and second ball I hooked him for a 6। तो वो एक चीज थी कि हाँ भाई ऐसा है। Nice. Amazing. So I think I'm going to close the floor now, and thank you so much for actually giving us your time and sharing your story with us. It was really inspiring and also a lot of fun for me talking to you. I hope you achieve great success and you play for India soon. Thank you so much. It was so nice talking to you, and the questions asked to me were yes, very really good, and thank you so much. Yeah. All right. Okay. Thank you everyone for joining us this month, and hope to see you next month.